हेलो गाइस, मैं हूं तन्मय भट्ट और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तन्मय भट्ट में। दोस्तों, C++ लैंग्वेज के पार्ट 3 में हमने देखा था रेफरेंसेस के बारे में, कैसे उसको एलॉक और डिलॉक किया जाता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले C++ ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में, कैसे ऑब्जेक्ट क्लास को यूज किया जाता है, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं C++ ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में। द मेन पर्पज ऑफ C++ प्रोग्रामिंग इज टू एडेड ऑब्जेक्ट orientation to the C programming language, and classes are the central feature of C++ that supports object oriented programming and are often called user defined types. A class is used to specify the form of an object, and it combines data representation and methods for manipulating that data into one neat package. The data and functions within a class are called members of the class. अब हम बात करते हैं C++ क्लास डेफिनेशंस के बारे में। When you define a class, you define a blueprint for a data type. This doesn't actually define any data, but it does define what the class name means. That is, what an object of the class will consist of and what operations can be performed on such an object. A class definition starts with the keyword class followed by the class name and the class body, unclosed by a pair of curly brackets. A class definition must be followed either by a semicolon or a list of declaration. For example, we define the box data type using the keyword class as follows. देखिए उसका एग्जाम्पल क्लास बॉक्स क्लास यहाँ पे बनाया, उसका नाम बॉक्स दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पब्लिक, डबल लेंथ, डबल ब्रेथ और डबल हाइट. द कीबोर्ड पब्लिक determines the access attributes of the members of the class that follows it. A public member can be accessed from outside the class anywhere within the scope of the class object. You can also specify the members of a class as private or protected, which we will discuss in a subsection. अब हम बात करते हैं दोस्तों डिफाइंड C++ ऑब्जेक्ट के बारे में. A class provides the blueprints for our object. So basically an object is created from a class. We declare objects of a class with exactly the same sort of declaration that we declare variables of basic types. Following statements declare two objects of class box 1, box 2. Declare box 1 of type box or declare box 2 of type box. Both of the objects box 1 and box 2 will have their own copy of data members. अब हम बात करते हैं accessing the data members. The public data members of objects of a class can be accessed using the direct member access operator. Let us try the following example to make the thing clear. Has include IOStream using namespace std class box. यहाँ पे क्लास बॉक्स बना है पब्लिक, उसका डबल लेंथ, डबल ब्रेथ और डबल हाइट बॉक्स का नाम दिया हुआ है, और इंटीजर मेन बॉक्स 1 बॉक्स और बॉक्स 2 डिक्लेयर बॉक्स 1 ऑफ टाइप बॉक्स, डिक्लेयर बॉक्स 2 ऑफ टाइप बॉक्स, a double volume equal to 0.0. Store the volume of a box here. Box 1 specification. Box 1 dot height equal to 5.0. Box 1 dot length equal to 6.0. Box 1 dot breadth
7.0. Box 2 specifications. Box 2 dot height 10.0, box 2 dot length 12.0, box 2 breadth 13.0. Volume of box 1, volume equal to box 1 dot height multiplication box 1 dot length multiplication box 1 dot breadth. और यहाँ पे सी आउट किया है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 और वॉल्यूम एंडल. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 को वॉल्यूम इक्वल टू बॉक्स 2 डॉट हाइट इक्वल मल्टीप्लीकेशन बॉक्स 2 डॉट लेंथ मल्टीप्लीकेशन बॉक्स 2 डॉट ब्रेथ. सी आउट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 वॉल्यूम एंडल और रिटर्न 0. व्हेन द अबव कोड is compiled and executed, it produces the following result: volume of box 1 210 or volume of box 2 15 or 60. It is important to note that private and protected members can not be accessed directly using direct member access operator. We will learn how private and protected members can be accessed. अब हम बात करते हैं दोस्तों C++ क्लास मेंबर फंक्शंस के बारे में. A member function of a class is a function that has its definition or its prototype within the class definition. Like any other variable, it operates on any object of the class of which it is a member and has access to all the member of a class for that object. Let us previously define class to access the members of the class using a member function instead of directly accessing them. यहाँ पे क्लास बना है, उसका नाम बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर पब्लिक टाइप है डबल लेंथ डबल ब्रेथ डबल हाइट और डबल गेट वॉल्यूम, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वर्ड जो रिटर्न्स बॉक्स वॉल्यूम को किया जाता है. मेंबर फंक्शंस कैन बी डिफाइंड विद इन द क्लास डेफिनेशन और सेपरेटली यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. Defining a member function within the class definition declares the function inline, even if you do not use the inline specifier. So either you can define volume function as below. क्लास यहाँ पे एक नाम दिया है बॉक्स, पब्लिक टाइप डबल लेंथ डबल ब्रेथ और डबल हाइट, डबल गेट वॉल्यूम, फंक्शन बना है void, रिटर्न लेंथ मल्टीप्लिकेशन ब्रेथ और मल्टीप्लिकेशन हाइट. If you like, you can define the same function outside the class using the scope resolution operator as follows: double box resolution operator, get volume void, return length multiplication breadth multiplication height. Here only important point is that you would have to use class name just before resolution operator. A member function will be called using a dot operator on object where it will manipulate data related to that object only as follows: box my box create an object or my box dot get volume bracket call member function for the object. Let us put above concepts to set and get the value of different class members in a class. Has I include IOStream using namespace std, class box public, double length double breadth double height, member functions declaration double get volume void set length double length void set breadth double breadth void set height
double height. Member functions definition, double box, resolution operator, get volume or void. Return length, multiplication breadth, multiplication height. Void box, resolution operator, set length or double length. Length equal to length. Void box, resolution operator, set breadth or double breadth. Breadth equal to breadth. Void box, resolution operator, set height, double height. Height equal to height. Integer main box 1 box or box 1 box 2 double volume equal to 0.0. Box 1 specification, box 1 dot set length 6.0, box 1 dot set breadth 7.0, box 1 dot set height 5.0, box 2 dot set length 12.0, box 2 dot set breadth 13.0, box 2 dot set height 10.0. Volume of box 1, volume equal to box 1 dot get volume. See out volume of box 1, volume handle. Volume of box 2, volume equal to box 2 dot get volume. See out volume of box 2, volume और handle. यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे box 1 dot set length, जो box 1 और 2 है उसकी वैल्यू को यहाँ पे सेट किया हुआ है और इधर box 1 और box 2 की वैल्यू को गेट किया हुआ है. When the above code is compiled and executed, it produces the following result: volume of box 1 to 10, volume of box 2 15 और 60. अब हम बात करते हैं दोस्तों C++ क्लास एक्सेस मॉडिफायर के बारे में. डेटा हेडिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स of object-oriented programming, which allows preventing the functions of a program to access directly the internal representation of a class type. The access restriction to the class members is specified by the labeled public, private and protected sections within the class body. The keyword public, private and protected are called access specifiers. A class can have multiple public, protected or private labeled sections. Each section remains in effect until either another section label or the closing right brace of the class body is seen. The default access for members and classes is private. Class based public members go here, protected members go here, or private members go here. अब हम बात करते हैं दोस्तों पब्लिक मेंबर्स के बारे में. A public member is accessible from anywhere outside the class but within a program. You can set and get the value of public variable without any member function as shown in the following example. Has include IOStream using namespace std, class line, public double length, void set length or double length, double get length void. Double line resolution operator, get length, void function, return length. Void line resolution operator, set length, double length or length equal to length. Main function for the program, integer main, line or line, set line length, line dot set length 6.0, see out length of line, line dot get length. यहाँ पे लेंथ के वैल्यू गेट किया हुआ है और हैंडल सेट लाइन लेंथ विदाउट मेंबर फंक्शन, लाइन डॉट लेंथ इक्वल टू 10.0, सी आउट लेंथ ऑफ लाइन, लाइन डॉट लेंथ हैंडल और रिटर्न 0.
When the above code is compiled and executed, it produces the following result: length of line 6 or length of line 10. अब हम दोस्तों बात करते हैं द प्राइवेट मेंबर्स के बारे में. A private member variable or a function cannot be accessed or even viewed from outside the class. Only the class and friend functions can access private members. By default, all the members of a class would be private. For example, in the following, class width is a private member, which means until you label a member, it will be assume a private member. Class box double width public, double length void set width double get width void. Particularly, we define data in private section and related function in public section, so that they can be called from outside of the class as shown in the following program. Has include IOStream using namespace std class box public double length void set width double get width void और प्राइवेट के अंदर लिखा है डबल विथ मेंबर फंक्शन डेफिनेशन डबल बॉक्स विजुअलाइजेशन ऑपरेटर गेट विथ और void फंक्शन. रिटर्न यहाँ पे विथ की है. void बॉक्स विजुअलाइजेशन ऑपरेटर सेट विथ डबल विथ और विथ इक्वल टू विथ. यहाँ पे विथ सेट की हुआ है. मेन फंक्शन फॉर द प्रोग्राम में इट इज अ मेन बॉक्स और box dot length equal to 10.0 cout length of box dot length और ended. box dot width equal to 10.0 box dot set width 10.0 cout width of box dot get width ended or return 0. When the above code is compiled and executed, it produces the following result: length of box 10 width of box 10. अब हम दोस्तों बात करते हैं द प्रोटेक्टेड मेंबर्स के बारे में. A protected member variable or a function is very similar to a private member, but it provided one additional benefit that they can be accessed in child classes, which are called derived classes. You will learn derived classes and inheritance in next chapter. For now, you can check following example where I have derived one child class small box from a parent class box. Following example is similar to above example, and here with member will be accessible by any member function of each derived class small box. Has include IOStream using namespace class box protected double width class small box और box public के अंदर void set small width और ब्रैकेट के अंदर डबल गेट स्मॉल विथ ब्रैकेट के अंदर void. मेंबर फंक्शंस ऑफ चाइल्ड क्लास डबल स्मॉल बॉक्स विजुअलाइजेशन ऑपरेटर गेट स्मॉल विथ void रिटर्न विथ void स्मॉल बॉक्स विजुअलाइजेशन ऑपरेटर सेट स्मॉल विथ डबल विथ इक्वल टू विड. इंटीजर मेन स्मॉल बॉक्स और box dot set small width 5.0 cout width of box dot get small width or end return 0. When the above code is compiled and executed, it produces the following result: width of box 5. तो दोस्तों हमने आज बात की क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में, कैसे प्रोटेक्टेड मेंबर्स है, प्राइवेट मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स है, कैसे यूज होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस किए. तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. हम फिर मिलेंगे
न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।